Good evening and a very warm welcome to all of you in the 7th edition of Ahmedabad International Literature Festival, which we are doing offline as well as online. Uh, Today, on behalf of all our entire team of Ahmedabad International Literature Festival, I wish you all a very happy World Environment Day. This is a very special session which we are going to organize today. Generally, we do it on Saturdays, but because of this Environment Day, every year we have a very special session with the experts. And today, we are very proud and privileged to have very expert speakers with us, very experienced, those who are the domain experts in their areas. And we are very young children, those who are the future citizens of the country and the world. They have to take forward a healthy and happy environment to the world. So, uh, before we proceed further, I would like all of you to watch a small video of Ahmedabad International Literature Festival, which was started in 2016. This is the 7th edition. Uh, offline gathering will start in somewhere October and November. Dates are yet to be announced. But small activities, what we have been doing, you can just watch. Ahmedabad International Literature Festival, which aims to promote reading and writing, particularly in children and young adults, started with a bang in 2016. Mr. Umashankar Yadav, the founder-director of AILF and Icon Education Foundation, with his able and committed team, has taken the literary discourse of the city to a new height, with 3 successful annual editions of the Literature Festival. इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से उसी इक्वल प्लेटफॉर्म और उतना ही ऑनर मिलना चाहिए, वो उन्नत समाज की निशानी होती है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है. આ પ્રક્રિયા છે તે જળ બિંદુમાંથી મોટી થવાની પ્રક્રિયા છે. AILF जैसे पहल रखी गई है, ये बहुत जरूरी है. AILF has gained widespread appreciation and popularity and has been applauded for its continuous and commendable work. Every time AILF proudly presents a collective diverse of distinguished speakers from the fields of literature, art, cinema, journalism, business, politics, academics and more, who shared their insightful opinions and compelling takes on a variety of subjects. અહીંના નાગરિકોને આર્ટ, કલ્ચર, લિટરેચર આ તમામ બાબતોમાં પણ એક મંચ મળી રહે અને કલા અને સંસ્કૃતિને પણ પ્રોત્સાહન મળે. સંસ્કૃતિ આપણી કલા એ આજની નવી પેઢી સુધી પણ પહોંચે અને એ લોકો પણ આપણી આ જે સંસ્કૃતિ છે એને ગરિમાને જાળવી રાખે તેના પ્રયાસ રૂપે અમે આ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કર્યું. A host of other activities like book launches, authors' interactions with attendees, workshops, art and craft displays are also a huge draw for people. Various contests and awards make the festival even more fascinating and lively. Cultural events of the AILF with musical evenings and engaging literary discussions are promoting literary tourism to Ahmedabad, making the city an important literature destination in the country. Ahmedabad International Literature Festival resolves to continue serving literature lovers the best of everything that the world has to offer. उनका वर्णन मिलता है. हमारा संपूर्ण साहित्य उसका मतलब ही ये है जो समाज का कल्याण करे, हित करे, परोपकार करे, भलाई करे, वो साहित्य है. जिस साहित्य में ये वर्णन नहीं तो वो साहित्य नहीं, एक कल्पना मात्र हो सकती है. Welcome back once again. Before Ashwani ji starts with the panel discussion, I would like to have a small quiz competition with the young children, those who are available with us today. I would like to introduce one by one. Extreme on the screen is Aarzoo Liunagaria. She is undergraduate. She will be joining some university soon. She loves documentary watching and reading.
We have Aarya Patel. She's published author. She likes writing and reading stories. We have Pal Joshi, who is an artist. He likes drawing and painting. Uh, Arya is from Udgam school. Pal is also from the Udgam school. Then we have Parth Desai, who loves playing and playing guitar. Then we have our introducer, that is Hetvi Vaidya. Okay. Hetvi will be joining, I believe, a little late. So we can start with the quiz. Hetvi, if you can join, please. Yes. Hetvi is a ninth standard student of uh, Zebar School. And Hetvi, when I was reading your profile, I was so amazed you have not left anything which you don't do. She's a hockey player, represented district in her at her standard. She plays music. She's a classical lover, and she writes. She's a speaker. She hosts the shows. Before Hetvi introduces our panel speakers, I will have some questions to all of you, please. Right. Children, you have to answer. Are you concerned or aware about the things happening around you? You are concerned about something happening around you, or you are just worried about your studies, your family, your eating and drinking? All of you can unmute yourself. You concerned? Yes, no, or I don't know. You have to answer in 3 words. Yes, I am concerned. Arya, Yes, even I am concerned. Pal Joshi, you are concerned about? Yes. Okay, Hetvi, if you can answer. Parth, are you concerned about what is happening around your world? Yes, I am very concerned about. What about Hetvi? All of you keep yourself unmuted. Yeah, my second question again goes to all of you. All of you have to answer, and there is a surprise gift for the best answer. Our panel speakers will be judging who has given the best answer. So these questions are very secret. Nobody knows what were the questions. Which global issue is the biggest challenge for mankind? Forest degradation, I'm giving you the options. Forest degradation, that is biodiversity loss, sea pollution, climate change, solid waste management, or air pollution. There are 5 options. You can speak in 1 sentence or 2 sentences, starting with Arya. I think climate change is currently one of the biggest problems for Earth because climate change not only affects our environment and the weather conditions of Earth, but it also affects the biodiversity. So that will in turn affect how we live and how living things around us survive. Because there are lots of animals which are going extinct every day, and that is mostly due to climate change. Okay, so that's good. Pal Joshi, I will repeat the question again for you. Which global issue is the biggest challenge for mankind? Forest degradation, that is biodiversity loss, marine pollution, climate change, solid waste management, or air pollution? I think so too that climate change is one of the biggest issues right now because um, there is a lot of dependency on the climate in this world, and um, everything is co-linked. And if there's some climate change, then there we can also see changes in our daily life, and yeah. Okay, Hetvi, can you hear us? Parth, you can go ahead. Am I audible? Am I audible? Yes, you are. Yes, you are. Yeah. Did you hear the question? No, can you repeat? Yes. The question is, which global issue is the biggest challenge for mankind? Forest degradation, uh, marine pollution, that is sea pollution, climate change, solid waste management, or air pollution? For me, I think air pollution would be the biggest issue because humans they survive on air, right? Like we all breathe in oxygen and stuff. And if the air is only polluted and if air has dust particles and air keeps on going polluting and polluting, then humans they will breathe those that there are many chances for us to die. But
all the issues are equally harmful for every living being. Yeah. Hetvi, thanks. You have some network issues. If you can sort it out, please. Uh, Parth, you. Yeah. Uh, yes, I do think that climate change is the most problematic issue for us currently, because of climate change, many problems like melting of snow glaciers and uh, Okay. Yeah. increase in Thank sea you. level take place, which Arju, does Arju, what is the biggest challenge for you? Sir, the biggest challenge would be the biodegradation, the degradation of biodiversity because many of the species are extincting because of that, and a lot of wild species are moving towards the villages and all, and the overusage of fuels and coals is also affected at that. Yeah, thank you so much. Nice answers. Now we have another question. There are only two questions left. Which pollution do you think is the most dangerous to human health? Air pollution, water pollution, contaminated food with pesticides, solid waste, noise pollution, or nothing? Starting with Hetvi first. Which pollution do you think is Um, very I, dangerous? I think all of them are equally dangerous, but maybe food would be more for me because we Okay. we get energy from the food. Yeah, thank you. Parth? according to me, both like increase of pesticides in food and water and air pollution, both are equally harmful to us because due to air pollution, a lot of uh, diseases are increasing like asthma and others, Yeah, and also due to increase of pesticides in food, more and thank you. more newer diseases and Yeah, thank you. mutations are seen. Paljoshi, do you think these pollutions are harmful or they have no effect at all? And if yes, Yes, then which? they're definitely really harmful for us. But I do think that contamination of food is the most harmful because uh, we directly have food and you know the effects of eating Yeah, that contaminated food are very sudden and more severe. thank you. What about you, Arya? I think food pollution and air pollution both are very harmful, but air pollution is increasing daily, and I think the effects of it are long term and are very severe on humans because they can cause asthma or they can cause other breathing problems. And also, recently, it has been found out that it also affects the memory and the brain as well. So, I think that is very harmful for us. Thank you. What about you, Arju? Sir, air pollution and water pollution because the number of airborne diseases and waterborne diseases are increasing, and plants are also affected by the waterborne diseases because of the contaminated water. And Thank you. So we are moving towards the last question. Now this is based on your what you have done. Like things are happening, but what action have you taken to make this world a better living place in last 1 year? I'm giving you the options: planted trees, say no to car and used bicycle or went on foot, ensure better solid waste disposal. You are not blown the honking. Of course, you are not driving, so that honking is not uh, actually directly connected with you. But have you ever stopped anybody that don't honk? There is no necessity of it. Reuse water as much as possible. So there are five things: planted trees, saying no to car, using bicycle or on foot, better solid waste management, no honking, reuse of water as much as possible. Starting with Pal Joshi. Um, I actually love cycling, so if I need to go to nearby places or like buy groceries or something, I usually prefer cycling, and I do not ask my mom or dad or anyone in my family to drive me somewhere or anything. I prefer using cycle, and I also uh, try as much as I can to save water. So I feel those two things are the Hetvi, thank you. Yeah.
Yeah, I think me as Hetvi, well. I also have the hobby of cycling, so I always cycle to nearby places as much as possible and avoid going in different vehicles. And I also avoid water pollution. Like if there is any tap which is leaking, I make sure that it is closed properly and it is not leaking. So I think right. water pollution and riding the cycle. Thank you. Arju, what did you do in last 1 year where you made this world a better living place? Sir, I have stopped people from honking and I have take public transport once or twice to go to That's wonderful. places. So, how did you stop someone from honking? What did you say? This is not. There is no Like I need. was on the Activa and a car was honking constantly, so I said no. You got down out of it and stopped the car and said that you don't. No, like the window was down, so I said that Okay, don't you said stop okay. honking Yeah, for that. that's wonderful. That's wonderful. You took a very corrective action. Parth, Yes, from my side, I have since in the last few years I have tried managing my waste more cost in a more right manner. right. So that has been done or So thank you so better. much, everyone. These were very nice answers of the course general questions, and we can just feel safe and sure that these people. I mean, we are going to have very young, responsible, concerned, aware citizens in the future, where hopefully the world will be a little better living place. Before we go I ahead think with the Arya is left. Arya is left to answer for the last Arya, question. Arya, okay, Arya, Arya, please please go ahead. answer. Yes, Uh, yes, ma'am. Thank you. Um, thanks, ma'am, for reminding. for, Yeah. for that question, I think even I try to manage my waste because at our home we have two different dustbins, like one for the organic waste and one for the plastic waste. So that way we can differentiate the waste and the waste management can become easier. Also, for nearby places, I use cycle or I walk to nearby places, and for common destinations, I do carpooling with my relatives or my friends. So that way, the Hmm. number of cars will get reduced. Right. Thank you so much. I would request all our esteemed speakers to, if you have any questions to any of these students, participants, please ask. If you want to check their awareness or concern. Sir, Anil sir, if you can ask some question, Yeah, please. if you have a choice to do something which affects you or something which affects other species, which one will you prefer and why? That's a great. Yes. Who would like to answer? Did you understand the question? Hetvi, you understood the question? Yes, I did. If you are in a situation where the circumstances are against you as well as the other species, what would you do? You will save yourself first or the other species first? Like you are in the water, some fish is also in trouble and you are also in trouble, that kind of thing. May not be the right analogy, but this is something like this. Yeah, anyone? Arya, if you can. Um, I think in difficult situations, we all go to save ourselves, but practically thinking, it is wiser to save the other species because um, if many species go extinct, then humans cannot survive because every species is co-linked to each other. So it is wiser to save the other species, I think. Hmm. Anyone else will like to answer? Hetvi? Yeah, actually, me as well. I would also prefer saving the other species. Rather than saving others who might be more useful than you, and rather than going extinct, that would be a very worse thing. So I would prefer them. Sir, you are satisfied with the answer? Well, I would say I was waiting for Arzoo's response Arju, yes, please. because she's Sir, this yes. is a I want to psychological hear thing you, that and then one I'll will tell you save why I want to hear themselves from you. first. I'll tell you why. Yes, please go ahead. Sir, this is a psychological thing that we will save ourselves for first if we are in the difficult situation. Like, but
the situation depends upon that. Well, there are many instances in our history when people have sacrificed their life for saving the interest of the future. For Hmm. example, Vavilov, the famous scientist, Russian scientist who's known for gene bank, when there was a Second World War, and people then, and there was a bombing going on in St. Petersburg. After the war, people found that there were scientists in the Vavilov Center for Gene Bank where who had died on the chairs but did not eat the seeds that they had conserved because that would have lost the genetic Hmm. diversity which Vavilov had collected from around the world. So that was one of the most memorable example when people had a choice of eating those seeds and surviving or keeping those seeds safe for future, and they preferred to save it for future. The reason I asked Aarzoo was because Aarzoo I had expected the answer that Arya gave because of the reason that you were by and large focusing more on how environment affects, climate affects other species, or how can we influence others. But in this case, of course, you did not, which is fine. I think it's very good beginning of our conversation because we have young people who by and large are anthropogenic. That means they are more concerned with how pollution affects us, how things affect us, rather than how the ecosystem, the whole world, which is an integrated system, is behaving. So, for example, nobody seems to care about ocean, but we do not know how it feeds back into our everyday life, or for that matter, other subsystems of our ecosystem. So, I would wish that we give we spend more time in making our young generation aware of the integrated nature of different ecosystems and why it is important to conserve marine biodiversity or coastal systems or sea. I mean, many of you must have seen the videos of how much of pollution is there in the ocean, how much of plastic is there in the ocean. So that's one area which is very, very important for. And of course, the climatic change in the El Nino effect you must have heard about is shaped by the temperature in the, near Brazil and that waters, Pacific waters, how the temperature changes and that affects the temperature in our country, rainfall in our country. So therefore, there are feedback loops in the climatic system which we need to be aware of. I will stop here by saying that it is our flaw, our limitation, the elders, the teachers of like us, who have to do a better job of what we have done so Thank far in educating our younger generation about the integrated nature of our world. thank you There's so only much. one Earth. There's only one Earth. Thank you so much, sir. Yeah, this is only one Earth. This year's Environment Day theme is only one Earth. Anyone of you will like to ask any other question to these participants? Uh, yeah, the cities are expanding like anything, and the concrete jungles are coming up. If you allow to plan the city, what would you like to do so Hmm. that the population is accommodated and the heat islands would not develop? Hmm. Yes, Arya, if you can answer the question, you got the question? Yes, sir. Um, I think the solution to reduce concrete jungles is growing more trees because amongst the buildings, if there are more trees, then it can automatically there are several uses for it. It can reduce soil erosion. It can help cool the temperature around. It can help in causing rainfall. So, growing trees is one of the main solutions to reduce the growing Anybody? cities. Yeah. Uh, the answer is satisfactory, sir. Jagdish, sir. To an extent, yes. You not Anyone heard else? about Any green other walls? Green, I mean, we can have hanging any plants on other the other walls, person not would just like to? land. So, what Dr. Jagdish has said, even those who live in the high rise buildings can contribute by greening their balconies, greening their walls. They can hang the creepers down, and all of those contributions will help reduce reflexivity and then temperature. So, I think all of us, everybody, each one of us has a contribution to make.
Anyone of you will like to answer in a different way? All Joshi, Aarzoo, Hetvi, Parth, the same question in a different way? No? Okay. Fawzia ma'am, did you have any? Do you have any question for anybody? Yeah, I actually have one very simple question to all the students that based on today's discussion and your amazing awareness about the environment, which I really appreciate, what recommendation would you like to make to your school authorities? What is that one simple nudge that you would like to propose to them? Yeah, to your schools. Yes, Arju first. What would you Sir, like I to would have? like if there would be one suggestion, then my school should start the plantation campaign with the like primary students and all, like make an Okay. awareness among them. Okay. Anyone else? Arya, what would you like to suggest to your school authorities? Even I think it is helpful to bring awareness from all the standards like first standard, second standard. So growing up, we can understand the importance of protecting our environment. So it should be made a habit of understanding and awareness Yes. about. Yeah. Yes. Pal Joshi, do you- what would you tell to your authorities? I agree with them. And plus, nowadays the school campuses are pretty huge, and it is affordable to plant more trees. And if you uh, make the younger students plant the trees, then more awareness can be spread. Okay. Thank you. Parth. Yes. Uh, I think that during the like formative years of the studies of the students, the schools should teach the students about like creative ideas about how they can make the environment better. Like Professor Anil just said, like they can hang creepers on the windows. Like Hmm. those kind of creative ideas should be taught to the students so they can themselves get more ideas. You Like can give it to your society as well, your family, your own parents and society members. Yeah. Hetvi, anything? Then we can go Yes, ahead with this. I would like suggest my school to keep such 2 to 3 days once in a year, where like all the students of the school would plant one tree in the like the garden of the school or anything. So there should be some days decided in a year, which where there will be more plantation of the trees. Yeah. Thank you so much. I think we have enough Yeah. I think discussion. great thoughts. Yes, So great I would thoughts. request all of you to stay on the screen because you may come up with your during the discussion. You may come up with your own suggestions, with your own questions. So please stay on the screen if you are not having any pressing need. And Hetvi, if you can introduce shortly, they don't need. I mean, all of our speakers don't need any introduction, but still we have a protocol that introducing our speakers before going ahead. Yes, please go ahead now, Hetvi. Yeah, thank you so much, sir. So we have beautiful chief guests here. So first one is Dr. Fawzia Tarannum. So she is an assistant professor in the Coca-Cola Department of Regional Water Studies at the Teddy School of Advanced Studies, New Delhi. She is an interdisciplinary water professional with 22 years of experience in project management, teaching, research, and training. She is also an awardee of the University of Nairobi, which is IDRC Doctoral Research Grant. She is a climate reality leader and has conducted training programs based on water conservation, climate change, renewable energy, gender equality, amongst other, and around over 4,000 students, teachers, Hmm. youth groups in India, and is an excellent water professional. So Thank you. next we have Dr. Jagdish Prasad. He is a Gujarat cadre retired Indian Forest Service officer. He has worked in different senior positions of Government of Gujarat and retired as an additional principal chief conservator of forests in 2021. Sir is a compassionate writer and has been talking about the social and environmental causes since the year 2002. And Dr. Prasad has written a book called Hriday Spandan, which is a collection of his 50 Hindi poems. So amazing, right? Then we have Professor Ashwani Kumar.
He is a known academician and professor in field of environment. He has obtained civil engineer from IIT Kanpur and has about 20 years of experience. He received international training from European Union on urban environment management and is a recognized green buildings evaluator. He has worked with the central government and was a key team member of a World Bank funded project. He teaches in interdisciplinary areas of climate change mitigation and adaptation, environmental impact assessment, environmental technology and policies, water and sanitation infrastructure, and also environmental resource conservation. Last but definitely not the least, we have Professor Anil Gupta. He is a visiting faculty at the Indian Institute of Management, Ahmedabad, and also at IIT Bombay. He has done PhD in management and MSc in biochemical genetics. He is also the founder of the Honeybee Network, National Innovation Foundation, and Shishti. His mission is to expand the global as well as local space for innovations from and for grassroots, link ideas in formal and formal sectors to ensure recognition, respect, and reward for creative communities, individuals, children, tech students, etc. Over to you, sir. Hetvi, thank you so much. The most important thing which you left out about Anil sir is he has been in Indian Institute of Management as a regular professor for 36 years of distinguished service and was awarded Padmshri by the Government of India in 2004 for management education. This is the best thing. Yeah, sir, we are honored to have you here, and we are honored to have all our speakers, esteemed speakers, with us. I would request Ashwani ji to please take over the session and go ahead with. Hetvi, it was a wonderful presentation. I mean, the way you spoke, that was really great. Anil sir, would you like to say a few words about the young girl? No, I think she introduced so well, and all the other young speakers and participants. I must compliment you on the breadth of your knowledge, as Fawzia said, and many of you are aware of deeper issues. You are aware of some of the feedback loops from the other systems of environment to on us, and you seem to be quite concerned and responsible. I hope that you will create new examples of responsibility and new innovations, and creativity will be evident in your behavior in future. You will all be opinion leaders. When you go back from this program, at least 10 of your friends will be influenced by some ideas that we are going to talk about today. I'm very much hopeful that each one of you will share what you found it good or bad in this conversation with your friends. Thank you. Yes, sir. Ashwani Kumar ji, please go ahead. You're mute, sir. Ashwani ji, you are mute. Yeah. Thank you, Umashankar ji. Firstly, to place me among the luminaries of the environment and climate change domain, and especially because I was a student of Professor Anil Gupta when I was a young graduate. I did few of the courses that I am, not the full MBA, but some courses. And I see him still with the same energy 25 years back, what he had. And that's what is always remain a somewhat motivating factor for me to see him as a strong, energetic, as well as you can say very, very approachable scientist and professor out there. So thanks, Kumar Shankar ji. Along with that, senior officials like Jagdish sir and good colleague Fawzia, who is with me here, and you have slightly placed me in tough task of asking questions or moderating a kind of panel discussion, and also because as I understand, all the young friends who have spoke just before us, they were almost knowing the things, at least in terms of uh, kind of top layer and what's being discussed globally, the issues. And I think that's become more tougher for all of us because we have to bring it something more than that. And on the other side, we all are probably happy. All the speakers will agree that we are happy that educational system has given them a kind of sense of purpose. Probably we were also doing cycling, but we didn't know how benefit it is for me, for my health or something, and we stopped doing that somewhere. So probably I think we know the purpose of our action and the impact of our action, that will give us more zeal and more conviction to keep on doing that work.
if we commit to that reason as well. So I think without having much discussion on the thing, and overall theme of this year is a one planet Earth, and I see this concept as one planet Earth as a two-dimensional. One dimension is planet Earth is not owned by humankind; it is for all species. So that's a one planet Earth concept, is that we all species have an equal right, whether we speak a language, Hindi, English, Gujarati, or anything else, or we don't speak like any other animals. Like you may be hearing some of the dogs are barking just outside my home as of now, but they are also speaking among themselves and fighting, or you can say doing something. So everyone has an equal right on this earth. That's a one dimension. Even if we look into the humankind, all the humankinds, whether they are poor, whether they are rich, whether they are in a cities, whether they are in a rural area, they all also have a equal right, and that gives us a intergenerational as well as inter spatial equity or equality. So that's a second dimension of this concept of one planet Earth. So we cannot think only about the cities. We cannot think only about something which is relevant to me only. We have to think somebody who is sitting in Africa, somebody who is sitting into the Maldives, the islands which are under the severe threat. So that gives us the another dimension. That is not me. It's all the human beings. 7 billion plus people are together. We are, and this planet is like a spaceship. That's what the initial concept was given, and we are in a universe, and we don't know what's going to happen. May not happen in my lifetime or later on, but something is changing, and I'm happy that all the group, all the young lot has understood one of the global challenge what we are facing and being discussed, that is the climate change. And I thought to pick up that as a one of the overarching or umbrella discussion what we have, and then I will also bring the each speakers or each panelist domain, so that get more deeper into the that particular sector. So if in a round of the question, my first question would be that we have gone through the research of almost 30 years in this climate change area, and which is a very slow phenomena, though its impact we trying to understand in many sectors and many aspects of the human life. uh, what do you think we could able to conclude so far, that these are the impacts which are concrete, these are the impacts which are certainly going to happen a very very deep way on the human economy, human life, or human even sociological interaction what we have in three of the sectors. Sectors could be, for example, biodiversity as a one of the sector, okay, is getting impacted from climate change. Food systems and agriculture and horticulture, that is also getting affected. And another important is a water as a one of the natural resource is also getting affected. So since all three speakers come from one of this domain, so I will request Dr. Jagdish to start with, to give us in terms of biodiversity sector, how do you think we could able to conclude the some of the significant impact the sector is going to face because of the climate change phenomena? Sir, Sir, over to you. sir, with due respect to you, sir, if any of you students wish that, because you were not informed that you'll be attending the whole session, if any one of you think that you have some work and you want to leave the session, you are most welcome. Please don't be under any kind of compulsion, because we told you that we are going to be part of the quiz only. So any one of you and all of you, if you wish, you can leave. Yeah, sure. Please go ahead. Thank you, sir. Biodiversity, as you know, is the very basis of our survival. And due to this global warming and climate change, actually plant community, that is biosphere, is the recycling system of whole atmosphere. Whole environment factors, you can take air, water, what we call it, Panch Mahabhuta, Chit Jal Pavak Gagan Samira, Panch Tattva Mil Bana Sarira. ये all five vital elements, they are recycled through biosphere, that is the plant life, and the animals and microorganism and everything depends on this, and that is the food chain system. So biodiversity, which is very basis of survival, is decreasing at the alarming rate, and that rate is
100 to 1,000 times of natural extinction. You know, in the nature, some of the species are evolving on its own, and some of the species are getting extinct every minutes and every year and every time. But the extinction rate has been increased by 100 to 1,000 times due to increase of this global due to global warming. So that is the difficult situation. And another thing is the forest area. 4.7 million hectares of forest are decreasing every year in the world. That is to the size of 1/4 of the geographical area of Gujarat. That is a very alarming rate. Of course, it has reduced substantially in the last decade, but it is still at a very alarming rate. The forest fire are very important and global concern nowadays. We might have heard about the this fire in Australia, fire in cheer pines in the Himalayas, and in the USA and Canada. Well, it takes months together to get it controlled, and a lot of trees, and along with that the plant life, and even the soil fauna that is destroyed. And the IUCN report says that 68% of vertebrate species we have lost during the period of 1970 to 2016. You can imagine what is this gravity. 68% of vertebrate species population has decreased within this short span of 40 to 45 years. So that is the concern. And the deity of the time that we should learn to live in harmony with the nature, and that is the present theme of Environmental Day also, living sustainability in harmony with nature. And we have faced the wrath of the nature that we have seen already, a trailer that has been shown by the nature during COVID-19 pandemic. So biodiversity is the cause of concern because we are connected with the environment, that is abiotic components of the environment through this biotic entity, and therefore the biodiversity is most important. And international level, that's why there is a convention of biodiversity conservation, and rules and laws and acts have been promulgated in all the states to conserve this, and community have been deeply involved. But unfortunately, that the challenge today is that community, they have been empowered, but just on paper. They do not know how to do, what to do, and where. They do not know their strength. There should be somebody like Jambant who can tell the Hanuman what he can do. So this is the problem. Thank you very much. Over to Professor Ashwani. Ashwani sir, I have a question. If you have, अगर आप इजाजत दें तो मुझे डॉक्टर फौजिया से पूछना है. Yeah, sure. डॉक्टर फौजिया, आपके लिए और सभी पैनलिस्ट के लिए, इवन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक साधारण सा सवाल है कि अपना जैसे भारत देश है, developing countries at the verge of doing lot of things, and other Asian countries, African countries, those which are not developed, जिनको रोटी कपड़ा और मकान की चिंता रहती है, जिनको खाने की चिंता रहती है, ये अपने जैसे देश की जो व्यवस्था है, इसमें कितने लोगों को ये पर्यावरण, प्रदूषण, पानी, खाना और ये एयर पोल्यूशन, इनकी चिंता है? कितने % लोगों को आपके हिसाब से इसकी चिंता होगी? कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे पहले खाना तो मिले, थी हम प्रदूषण की बात करेंगे, कंटेमिनेटेड फूड की बात जो आरजू बात कर रही थी, आर्या कर रही थी. कुछ लोग बोल रहे हैं यार मुझे पहले खाना तो होना चाहिए मेरे पास, फिर हम बात करेंगे. तो ये जो समस्या है एक लार्ज पार्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये कितना पॉपुलेशन होगी और क्या सही में ये अफेक्ट कर रही है पर्यावरण को भी? क्योंकि उनको व्यवस्था नहीं है उनके पास, तो वो सोचते हैं मुझे पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं, भाई पहले मैं जिंदा रहूंगा तो पर्यावरण आएगा ना पिक्चर में.
तो डॉक्टर फौजिया, आपका क्या इसमें सवाल है? क्या आपका आइडिया है? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और जब मैं एक्चुअली एक स्टडी कर रही थी, तब मैंने आई केम अक्रॉस इन द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। सो एनवायरमेंटल नीड्स जो होते हैं, हम कहते हैं वो टॉप टॉप ऑफ द पिरामिड में है, एंड दे डोंट कॉन्स्टिट्यूट बेसिक नीड्स। जो हम आपने जिक्र किया कि रोटी पकड़ कपड़ा और मकान का जो जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं हम जो हैं, जो ग्लास हाउस में रहते हैं और इलीट लोगों में काउंट करते हैं अपने आप को, हमारे अंदर ये आई वुड से मिसपरसेप्शन है कि वो गरीब जो 2 स्क्वायर मील्स के लिए अपनी रोज जद्दोजहद जंग में लगा हुआ है, उसे इस चीज के बारे में शायद मतलब इट इजंट द मेजर कंसर्न। यू आर एब्सोल्युटली राइट इन टर्म्स ऑफ मेजर नहीं है, बिकॉज जिसको पानी नहीं मिल रहा है, फॉर इंस्टेंस आई टेल यू, इन a large part of Haryana, people are suffering from dental and skeletal fluorosis. They aren't aware कि even मतलब उनको ये तक पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम उनके अंदर पानी से आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको पर्यावरण के विषय में कंसर्न नहीं है। they are the ones probably who lived most harmoniously with the environment. उनका जो living style था, that was always in harmony, that continues to be in harmony. तो हम वेस्ट जनरेशन की बात करते हैं या बहुत सारी चीजें जो हम एलीट समझते हैं कि हमें मालूम है, उसके बावजूद चाहे वो प्लास्टिक जनरेशन की हम बात करें या हम एमिशंस की बात करते हैं, आई थिंक प्रॉबेबली एज एलीट वी आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टुवर्ड्स इट। तो खाली वो समझ और अपने आप को दैट स्यूडो नॉलेजेबल पर्सन समझना, I would say is wrong, and it's more hypocrite to really believe that. I would say that they are perhaps concerned most about the environment. That said, आप अगर local उन जगहों पे जाएंगे जहां पर आप देख रहे हैं कि even India में wherever we are taking efforts to rejuvenate our environmental system, जो भी है हमारा, चाहे पानी है चाहे forests है, तो the ones at the bottom of the pyramid perhaps are contributing the most. And we are somewhere trying to provide those intellectual thoughts, but they are the ones perhaps who are sort of trying to contribute in terms of labor, in terms of protection, in terms of rejuvenation. जो हम SHG self-help groups वगैरह बना रहे हैं at local levels, who are they? They are the ones who are actually struggling for 2 square meal. Who are the ones in cities who are surviving with 5 liters of water or 10 liters of water every day? It's the poor, it's the people in the slums who are surviving. So to say that they aren't really living in harmony with the nature would really be wrong. It is for us, for the government, to ensure for their well-being, and probably they are also provided equal right to live. That's very important, I would say. I'll stop here and maybe I'll get thoughts from other panelists as well. अनिल सर, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? आप म्यूट हैं सर। सर आप म्यूट पे हैं। अनिल सर आप म्यूट हैं। तो मैं हिंदी में बोलूं, कोई दिक्कत तो नहीं? हिंदी में बोलिए। यस सर, यस सर। हिंदी मीडियम वाला हूँ, इसलिए कई बार क्लास में हो जाता है, मेरे से स्लिप हो जाती है, तो फिर मैं स्टूडेंट से परमिशन लेकर दोबारा से अंग्रेजी में बोल देता हूँ। तो बात ये है कि ऐसा सोचना कि जो पर्यावरण की चिंता केवल एलीट्स को, ऐसी बात तो नहीं है। फौजी ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन इतना थोड़ी सी करेक्शन करना चाहता हूँ कि जो बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड की बात की, बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड कहना चाहिए हमको हमेशा, कभी भी बॉटम ऑफ द पिरामिड नहीं टर्म यूज करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जाहिर होता है, ऐसा मन में आता है विचार कि जो लोग बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड में है वो बॉटम ऑफ एथिकल पिरामिड, बॉटम ऑफ एनवायरमेंटल पिरामिड, बॉटम ऑफ इंटेलेक्चुअल पिरामिड, बॉटम ऑफ इनोवेशन पिरामिड भी है। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है ना? हमने तो सारे जिंदगी लगा दी इस बात को साबित करने में कि भाई माइंड ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड। तो बहुत सारी इनोवेशन जो हमको मिली उन क्षेत्रों से मिली जहाँ पर पर्यावरण की चिंता बहुत ज़्यादा थी, जो फ्रेजाइल जोन है इकोलॉजिकली। हमारे को आनंद से इतनी इनोवेशन नहीं मिली जितनी हमें पंचमहल और कच्छ और बाकी जगह से मिली, सौराष्ट्र से मिली। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि जहाँ पर पर्यावरण ज़्यादा तनाव में है, जहाँ साधन सीमित हैं,
वहाँ समुदाय समाज ज़्यादा मेहनत करता है नए नए तरीकों को ढूंढने की और उनके साथ जीने की। 2 उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मेरे एक साथी है चेतन, उसने बड़े अच्छा अध्ययन किया। 200 गाँव में उसने गुजरात के अंदर जो चबूतरे होते हैं ना चिड़िया को अनाज डालने के लिए, उसका अध्ययन किया कि भाई वो चबूतरे बढ़े, घटे, जो अनाज जो हम डालते थे वो उसकी सामग्री, उसकी क्वांटिटी बढ़ी कि घटी। और आपको ताज्जुब होगा जानने में कि कितने सारे गांव हैं ऐसे गुजरात में, और ज़्यादातर कहाँ हैं, नॉर्थ गुजरात में हैं या सौराष्ट्र में हैं। जहाँ पर अन्न अधिक होता है वहाँ पर चबूतरे नहीं हैं। जहाँ अन्न कम है, जहाँ पर कमी है उत्पादन की, वहाँ पर चबूतरे ज़्यादा है। सूखा क्षेत्रों में चबूतरे ज़्यादा है। जहाँ पर लोगों के लिए अपने पास खाने को नहीं था वहाँ वो चिड़ियों को बांटते थे। जहाँ पर खूब सारे साधन थे वहाँ नहीं बांटते हैं। तो आप देखिए हमारे यहाँ समाज में एक परंपरा रही है, पहली रोटी हम लोग नहीं खाते थे पहले, हैं, गाय को, चिड़िया को, कुत्ते को, किसी को भी देते थे। धीरे धीरे ये परंपराएं कमज़ोर हुई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो गरीब लोग हैं या जो लोग आर्थिक रूप से उतने संपन्न नहीं हैं, वो दिमाग और दिल से थोड़ी करीब होते हैं। तो उनके पास, और वो आप सड़क पे चले जाइए, सड़क पे जो लोग रहते हैं ना, जब वो खाना खाएं आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनको बच्चे आप लोग ध्यान देना, वो अपने साथ जो आसपास के कुत्ते हैं उनको भी बुला लेते हैं। थोड़ा खाना होता है लेकिन उसी खाने में से वो आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको भी बांट देते हैं। आप देखना इस बात को, कभी ध्यान देना इस बात को। फ्लाईओवर के नीचे बहुत से लोग रहते हैं, वहां जाके देखना, तो आपको महसूस होगा यार हमने तो नहीं बांटा अपना खाना कभी किसी और जानवर के साथ, लेकिन ये क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि उनके पास कम है लेकिन दिल तो बड़ा है उनका। तो दिल के साइज का हमारी जेब के साइज से कोई संबंध नहीं बच्चा। जेब हमारी बड़ी हो सकती है लेकिन दिल छोटा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ये बहुत जरूरी है जी। तो सर मतलब ये हुआ, सॉरी, तो मतलब ये हुआ कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कम्युनिटीज हैं रादर, उन लोगों की तरफ से ही ज्यादा प्रेशर पर्यावरण पे पड़ रहा है, हमें ऐसा पड़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सोचिए तो सही, फौजिया ने एक अच्छा उदाहरण दिया कि पानी का कंजम्पशन आप देख लीजिए। मेरे कैंपस में जहाँ मैं रहा इतने साल 200 लीटर पर कैपिटा था। आप इनर सिटी में जाइए ना पुराने अहमदाबाद में, तो वहाँ पर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ 20 लीटर पर डे है, पर कैपिटा है। कहाँ 20, कहाँ 200। लॉन में वही पानी जा रहा है जो पीने का है। हम तो ग्रे वाटर नहीं कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। टेरी में क्या हालत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारी संस्थाओं में वाटर बजट सड़क पे दीवार पे नहीं लगाया होता कि हमारे कैंपस में कितना पानी गिरा, कितना पानी को हमने रिसाइकिल, रिपर्पस किया, रीयूज किया, और कितना पानी हमने नेट जो है जमीन के अंदर उतारा। इसका कोई लेखा जोखा हम देते नहीं। समाज को पढ़ाते जरूर हैं और पढ़ते भी हैं, किताबें भी छापते हैं, पेपर भी छापते हैं, लेकिन ये लेखा जोखा, ये जवाबदेही नहीं है हमारी। मैं तो सुबह कह रहा था किसी चर्चा में, जगदीश प्रसाद जी, इसके ऊपर आपको भी थोड़ी पहल करनी पड़ेगी कि गांधीनगर में जहां भी हमारे मंत्री और अधिकारी रहते हैं ना, अगर वो लोग अपनी छत का पानी जमीन पे नहीं उतारेंगे तो सरकार समाज से कैसे कहेंगे? किसी भी आपने अर्बन एक्सपेंशन की बात की, कितनी सोसाइटीज हैं जिनको बिल्डिंग यूज परमिशन जब मिलेगा जब उनके छत का पानी की व्यवस्था नीचे स्टोर करने की मिलेगी। ये तो परिवर्तन हम कर सकते हैं ना, आज ही कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे इस परिवर्तन को? अश्विनी जी आप समझेंगे ना बात को कि इतना सारा पानी का जो दबाव है। जब मैं आया था अहमदाबाद में उस समय का और आज के दर में करीबन 12 से 15 फीट पानी हर साल नीचे गया नीचे जा रहा है। और जितना पानी नीचे जाता है उसकी गुणवत्ता उतनी ही कम हो जाती है। जो फ्लोराइड का एग्जाम्पल दिया फौजिया ने, बहुत सही कहा कि मिनरल्स कंटेंट बढ़ता रहता है, पानी की गुणवत्ता खराब होती जाती है जितने नीचे जाते हैं। और वो पानी अगर हमारा हार्ड वाटर जो अब आएगा तो निश्चय हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे दांतों पर, सभी चीज़ों पे असर करेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो चिंता है पर्यावरण की, ये चिंता ज़्यादा उन लोगों को है जो कम साधनों में भी इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो ज़्यादा संपन्न लोग हैं शायद कम चिंतित हैं इसके प्रति, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे और हमारे साथी और हमारी युवा पीढ़ी जो है उसको महसूस करना होगा इस बात को, और उदाहरण लेने पड़ेंगे। मैं सोच रहा था स्कूलों में, जब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि वो लोग बात करेंगे कितने तरह के बिन हैं हमारे वेस्ट के, दो भी नहीं होते, कई बार एक ही होता है सिर्फ। हम ग्रीन और ड्राई को भी नहीं करते डिस्टिंग्विश, उसके बाद शीशा और कागज़ और बाकी चीज़ों की तो बात दूर रही। 6 तरह के अलग अलग बिन होने चाहिए, डब्बे होने चाहिए वेस्ट के, जिसको हम क्लासीफाई करें। कितनी इंस्टीट्यूशंस में हैं? बहुत कम में है। तो मतलब कहने का ये है कि जो हमें उदाहरण लगाने चाहिए, कॉलेज को उदाहरण देना चाहिए कि हम ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारे पास साधन है, हमारे पास जानकारी है,
हमारे पास शिक्षा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो बात ही हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वो वाली बात हो रही है, इसको बदलने की आवश्यकता। सर मुझे एक वाकया याद है, मैं एक बार वो क्लाइमेट चेंज के किसी भाषण में अमेरिकन राष्ट्रपति को सुन रहा था। वो यही बोल रहे थे कि देखिए हमारी तो आदत पड़ गई है, अब हम तो इतने एसी चलाएंगे, हम तो इतनी कारें चलाएंगे, तुम लोग डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, तुम लोग संभालो, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको संभालने की। यही हमारे भारत के एलिट में भी हो रहा है क्या? भैया हम तो एसी चलाएंगे 5 अपने घर में, कारें चलाएंगे, अब आप जिसके पास नहीं है वो तुम ध्यान रखो इसका, ज्यादा नहीं चलाओ। सर इसमें the right thing happening here also. जो उमाशंकर जी ने बोली, आई थिंक द जनरल टेंडेंसी, if we classify in terms of our slightly on the systematic way, एक group of community, or you can say one class of the community is worried about resources because they want to ensure this they should be getting it sustainably for long time, and that is, I think, they are exploiting at one side, as well as they want to ensure such exploitation remains at least at a present level. ये एक हमारे क्लाइमेट चेंज के अंदर भी एक बहुत बड़ा डिस्कशन डिबेट जो हमारी हर साल होती है दिसंबर में, कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसको कितना करना चाहिए। ये एक बहुत ही डिबेट वाला एक क्वेश्चन है जिस पे चल रहा है। और इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन, और जो अनिल सर ने अभी मेंशन किया, वो भी इसके अंदर ही निहित है कि जिन लोगों के ऊपर क्लाइमेट चेंज और किसी भी दूसरे पर्यावरण रिलेटेड स्ट्रेसेस का इफेक्ट है ज़्यादा, उन लोगों को उस स्ट्रेस और उस रिसोर्स की वैल्यू भी मालूम है, एंड वो लोग उसको शेयर करने के लिए भी रेडी हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि अगर पानी कम है तो सबको पानी चाहिए, मुझे भी चाहिए, बर्ड्स को भी चाहिए और इसको भी चाहिए। लेकिन जिनके पास पानी ज़्यादा है उनको लगता है कि पहले तो मुझे अपनी कार वॉश करनी है, क्योंकि वो सबसे ब्यूटीफुल लगनी चाहिए, रेदर देन कि भाई हमारा हरे हरे पेड़ हैं जो ब्यूटीफुल लगने चाहिए, पहले कार ब्यूटीफुल लगने चाहिए, क्योंकि मैं उसके सामने ही सेल्फी लेता हूँ है ना, और उसके सामने ही, उसके आसपास ही मैं अपना क्लास डिस्टिंग्विश करता हूँ। तो ये एक हमारा एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल चेंज, एंड इसके अंदर भी बहुत सारा काम करने के लिए हम सभी लोगों को एक्सपर्ट, सो कॉल्ड वी कॉल अवरसेल्व्स एक्सपर्ट, हम सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इसमें जो है हम वी आवरसेल्फ बिकम अ शोकेस। ऐसा नहीं है कि जो है मैं प्रोफेसर हूँ या मैं किसी एकेडमिक में हूँ, रिसर्च में हूँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे उससे संबंधित नहीं है। फॉर एग्जांपल दैट, और इसी रिस्पेक्ट में मेरा एक्चुअली उमाशंकर जी से जुड़ाव भी हुआ था इनिशियली, क्योंकि हालांकि मैं पढ़ाता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि बहुत सी चीज़ें जो जैसे अनिल सर ने बोला, लोगों से सीखनी चाहिए या जनरल पब्लिक से सीखना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो कितना रिलेवेंट है। तो जब भी उमाशंकर जी अपने फेस्टिवल का पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मैं उनके साथ एसोसिएट होकर कम्युनिटी से इंटरेक्ट करता हूँ, उनको ये बताता हूँ कि आप सॉलिड वेस्ट कैसे सेपरेट करें, आपको दिक्कत क्या है, उससे मुझे भी एकेडमिकली कुछ बेनिफिट मिलता है। डू इट योरसेल्फ वेस्ट, जैसे अनिल सर ने बोला कि कितने टाइप के वेस्ट हैं, किड्स के साथ बैठ के मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ वहाँ पे। सो ये इन्वायरमेंट के संबंधित लर्निंग ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में बैठ के या बुक में बैठ के ही सीख सकता हूँ, तो हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ लॉन्ग, किसी भी पर्सन से, वेदर वो होमलेस हो और चाहे वो बड़े घर वाला हो, जैसे ग्लास बिल्डिंग वाला हो, सभी से हमें सीखना पड़ेगा। जिसके पास ग्लास बिल्डिंग वाले के पास और कहीं पेड़ लगाने की कोई जगह नहीं बची है, तो उन्होंने अपनी खिड़की से ही क्रीपर्स लटका दिए हैं, चलिए कुछ तो किया है ना, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये वो एक चीज़ है। आप अपना टेरेस गार्डन लोग बना रहे हैं आजकल काफ़ी, उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को बता सकूँ किस टाइप के पेड़ लगाने, क्योंकि लोग किसी भी टाइप के पेड़ भी लगा लेते हैं इसमें, एंड कई ग्रुप्स भी इसमें एक्टिव हैं, तो लोग कोशिश कर रहे हैं। ओनली थिंग इज़ कि वी हैव टू कम टुगेदर, एंड ये यंग जनरेशन, इनको हमें पास ऑन करना है एज सच, क्योंकि ये एक दिन की मुहिम नहीं है कि हम जो है यहाँ से खड़े होके इंडिया के नॉर्थ से साउथ हम सब लोग ट्रैवल कर लें या कुछ कर लें तो उससे कुछ सोल्यूशन निकलने वाला है। ये इंटरजेनरेशनल नॉलेज और एक तरह से वैल्यू इनकलकेशन फ्रॉम अस टू देम एंड लर्न फ्रॉम देम टू अस। सो समटाइम्स किड्स आर मोर इंटेलिजेंट टू पोज अ क्वेश्चन एंड गिव्स अस द आइडिया कि नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। एंड प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर तो आई थिंक सालों से शोध यात्रा कर रहे हैं। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि टाइम निकाल के उस यात्रा में जा सकूं जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी आया हूँ 47वीं
47 हाँ। शो दिया आपने, हमारी रामेश्वरम में थी, अभी वापस आया वहाँ से। मुझे मालूम है। तो ये है, सो दैट इज आई थिंक वेरी गुड। आई थिंक उमाशंकर जी आपने क्वेश्चन लाया। एक्चुअली इसमें एक क्वेश्चन जो हमारा था, सेकंड क्वेश्चन, वो इसी पे आ रहा था, इसी से रिलेटेड आ रहा था। सेकंड क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है वो ये है कि अगर हम मीन्स इंक्लूडिंग ऑल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लास, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, अगर हमें समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज या इस टाइप के ग्लोबल फिनोमेना जो हमें लार्ज स्केल में इम्पैक्ट करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कौन से प्रोग्राम और कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अभी तक लास्ट 15-20 साल में, जिनमें हमें थोड़ी सी किरण दिखती है, जिसमें हमें थोड़ी सी लाइट दिखती है कि हाँ, ये अगर हम आगे बढ़ाते हैं अपने सेक्टर में, ईच ऑफ द एक्सपर्ट और ईच ऑफ द पैनलिस्ट हैव अ सेक्टर, इस सेक्टर में अगर ये प्रोग्राम जो गवर्नमेंट कर रही है, ये अच्छा इनिशिएटिव है, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो कुछ हमें दिख रहा है फ्यूचर में अच्छा हो सकता है। तो स्टार्टिंग विद थैंक यू सो मच डॉक्टर जगदीश प्रसाद जी से। सर एक मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है इसमें, क्योंकि आप कवि हैं और बड़े समाज के ऊपर बड़ी कटाक्ष करते भी रहते हैं कई बार, और जो एलिट क्लास है पर्टिकुलरली उसकी जो आदतें हैं, अब चाहे वो एलिट देश हो, चाहे एलिट सोसाइटी हो, चाहे एलिट कम्युनिटी हो, चाहे एलिट एक ये हो, आई मीन एरियाज हो, हम वो सभी देखते हैं। वो ये सोचते हैं, जैसा आपने बताया कि पानी को कार में कर देते हैं, ये सोच आती कहाँ से है कि नहीं हमें ज़्यादा एंटाइटलमेंट है सामान को यूज करने का, बाकी लोगों को कम है। उसके बाद फिर हम इस सवाल का आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने समाज को बहुत नज़दीक से देखा है, उसके बारे में बोलते रहते हो, तो ये सोच ही कहाँ से आती है आखिर कि हम ज़्यादा एंटाइटल्ड हैं ये सब यूज करने के लिए? देखिए, दो क्वेश्चन है। एक प्रोफेसर अश्विनी जो पूछ रहे हैं, पहले मैं उसको बता दूं जी, गवर्नमेंट में जो अच्छे प्रोग्राम, जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जिसके रूल्स और एक्ट बने हुए हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली वो प्रोग्राम जो है अभी भी टेक ऑफ नहीं हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर इंसाइट मिलती है, बहुत अच्छी इंसाइट मिलती है, अच्छी सलाह मिलती है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन, वो चीज बता सकते हैं। बट एक्शन हैज टू बी टेकन एट द नेशनल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल, एट आवर एंड. So we are measurably failing in implementing the environmental laws and environmental sites. That is one thing. But that is a very, very wonderful program. That is a biodiversity conservation program. And in all panchayats, the biodiversity committee are made, and committees are given power also. No one can remove a single wild species without the prior consent of the village panchayat, that is biodiversity committee, and that provision is made, but that provision is not implemented properly. That is one thing. Forest, you know that afforestation is going on since long, and there are questions from the side all the time, and I had been the part of forest department, that forest department is busy, spends so many years, but nothing is happening. But here is the question of degree. Forest department is working with how much of money? What is the amount? What is the degree of funds? So the degree of implementation intervention is very, very meager to tackle the real problem. For example, in Paris Agreement, we committed that 2 billion tons of carbon dioxide we will sequester within a period of say up to 2030. But where is the money? Where is the area? So this is the problem, most problem. And the most wonderful program the world over I have ever seen is the Sustainable Development Goals. There are 17 beautifully planned, beautifully written goals, and there are 169 targets of it. And they are touching all the sectors. Development, economic development, the environment, fauna, on land, above land, in the sea, everything. Wonderful document. But the problem is, again, we are bogged up with the old schemes and we are not changing. That requires just throw away the old schemes and go away to the new ones. So that is a paradigm change. And the government has a lot of inertia to change. So this is
another problem. But this is the most wonderful program, SDG. If we can implement this, nothing more is required. And on individual level, Dr. Anil Gupta has rightly pointed out, and what question you raised is whether the economically poor people are more damaging the environment or the economically well off. In my opinion, the economically well off people who are money minded, they are destroying the environment to a greater extent than the economically poor people. And the things are, पर उपदेश कुशल बहुते रे, जो वेल ऑफ लोग हैं वो दूसरों को ही उपदेश दे रहे हैं और उपदेश में वो माहिर है। इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ वो बोल सकते हैं, अच्छे अच्छे फ्लेवरी वर्ड एंड जार्गन्स एंड ऑल दैट, बट द ट्रू insight of developing the environment is found on the ground level. The people are living with harmony with the nature still today. No doubt they are dependent and they are using also the resources, but they are developing also. So that is the thing. And wherever you will find, I found in my PhD that the things, wherever the economic development has taken root, the forests are going away. Forests are diminishing. Yes. So education, particularly the education nowadays going on without any ethics, this is detrimental to environment. Now there is on individual level and long-term and permanent solution of the environment would be in the moral values of the population. How we can inculcate, that is another issue, right? And what was your question? Yeah. मेरा क्वेश्चन ये आपने जवाब दे दिया सर, आपने दे दिया जवाब उसका कि आखिर ये हमारे अंदर सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों आता है। वो पर उपदेश कुशल बहुतेरे वाली बात आपने जो बताई ना, वो बराबर है, वो ही आंसर है उसका। कि अब मैं अपने जो दो यंग स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े, अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल है आर्या एंड पार्थ, तो आप पूछ सकते हो एक्सपर्ट से। देन विल कम टू फौजिया मैम, देन इनका international level, the developed countries are passing the buck to the developing countries. वो भी उपदेश देते हैं, पर environmental amelioration, and the same thing we are doing in our country. Exactly. That developed people are passing the buck to the underdeveloped. मेरा पॉइंट यही था कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी हो गई क्या, जो अमीर हो गया वो सोचता है कि नहीं हम तो ठीक है एंटाइटल्ड हैं और बाकी सब लोग करें, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आदत में शुमार हो गया हो। तो आदत में जो शुमार होने वाला मामला है, ये कहाँ जाके रुकेगा और क्यों ये आदत में शुमार हो रहा है, that we have to work on. We have to think about it as a society, as a community. तो मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन जो आई थिंक उमा शंकर जी ने पूछा कि ये सेंस हमारे दिमाग में कहाँ से एक अनएथिकल चीज़ घुसती है कि मुझे ज़्यादा एंटाइटलमेंट है। प्रॉब्ली आई थिंक यहाँ पे जो हमारे एक रेस फॉर द मनी वाली बात है, वो एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारे सोसाइटी ने एक तरह का बनाया हुआ है कि द पर्सन हु इज अर्निंग मोर इज अ सक्सेसफुल पर्सन, है ना। That's only the successful person. Now if I see, if I have to be prove myself successful person, that 24 hours are only available to me, I have to earn maximum, ना। और उसमें मनी अर्न करने का जहाँ पे हमारे मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट आ जाता है rather than optimization, ना, वहाँ पे फिर मैं ये सोचने लगता हूँ कि मेरे लिए कुछ भी सोचना कि ये सॉलिड वेस्ट यहाँ से उठा के मैं डस्टबिन में क्यों डालूँ, अलग अलग 12-6 तरह के अलग अलग में, ये मेरे लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं इस पेड़ को क्यों लगाऊं 1 घंटा खर्च करके, वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं अपने घर से थोड़ा सा दूर या कॉलेज या मार्केट से दूर गाड़ी खड़ी करके क्यों पैदल जाऊं, वेस्ट ऑफ टाइम है पैदल जाना। तो जहाँ पे हमारे माइंड में वो घूमने लगता है कि माई टाइम इज माई वैल्यू एंड आई हैव टू अर्न दैट, वहाँ पे ही प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी आई थिंक ये हमारे स्कूलों का और घरों का, पेरेंट्स का एज वेल एज इन जनरल सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कहीं पे भी एक अच्छा एक्शन आप देख रहे हो तो उसको अप्रिशिएट कर देना चाहिए। देन एंड देयर मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है लुकिंग एट द मूवी। हमने वो मूवी देखी थी मुन्ना भाई MBBS वाली, प्रॉब्ली सबने इसको याद होगा। उसमें एक सीन था जिसमें वो जाके एक स्वीपर को हक करता है, एक सीन आपको याद होगा, जिसमें मैंने वो अपने खुद के इंस्टीट्यूट में उसको टेस्ट किया कि हम लोग कई बार जैसे टॉयलेट या बाथरूम की तरफ जाते हैं
और स्वीपर लगा रहे होते हैं, हम लोग खट खट जल्दी से निकल के चले आते हैं. आई स्टॉप, कई बार मैं ऐसे रुक तो जाता ही हूँ कि लेट हिम क्लीन इट अप, लेट इट गेट ड्राइड अप, देन ओनली आई हैव टू गो. दैट्स आई थिंक इज द बेसिक एथिक्स. वो क्लीन कर रहा है और कई बार मान लीजिए जल्दी में ध्यान भी नहीं गया और उस पर स्टेप अप करके हम निकल गए. तो 1-2 बार ऐसा हुआ, मैं निकल गया, बट मुझे याद आया कि नहीं ये तो मैंने गलत किया. मैंने पलट के उनको सॉरी बोला कि भाई आपने देखिए क्लीन किया, मेरे पास मैं भूल गया, मैं इस पर स्टेप करके अंदर जा रहा हूँ. उन्होंने भी बहुत हंसते हुए बोला नहीं सर कोई बात नहीं आप जाइए. सो एक तरह से वो एप्रिसिएशन उनको मोटिवेट करता है कि उनको साफ करते रहना है ना. नहीं तो उनके दिमाग में यही आता है कि मैं तो एक बार साफ करता हूँ और सब लोग आके गंदा कर देते हैं, तो क्यों करेंगे दिन में 10 बार. तो एक छोटी सी चीज़ है जो मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन ऑफ इररिस्पेक्टिव क्लास. कहीं पे भी आपको दिखे कोई आदमी पेड़ में पानी डाल रहा है तो जस्ट थैंक यू बोल के आइए. कि पेड़ नहीं बोल सकता है उसकी तरह से मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ. कोई पर्सन जो है कि सॉलिड वेस्ट इधर से उधर सही से रख रहा है तो बोल दीजिए थैंक यू. नहीं कर रहा है तो उसको बोल भी दीजिए कि आप रख देते तो ठीक है, मैं भी कर सकता हूँ, कर देता हूँ. तो एक बार ये जो छोटी छोटी सी हमारे प्रैक्टिस है ये ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम है. करेक्ट. तो उसमें अगर आप सोच लें कि 10 मिनट दिन का मेरा इसमें चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है. तो मुझे ये लगता है कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है. यही हमें प्रैक्टिस में लाना है. इनफैक्ट वी आर रनिंग ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ द टाउन. अनदर 5 minutes we can just take a conclusion. Fawzia ma'am, to you. आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉब्ली उसमें सबका चीज कवर हो जाएगी जो मेरे दिमाग में था कि फ्रॉम ईच ऑफ द स्पीकर एज अ लास्ट क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि उनके अपने डोमेन में एक ऐसा बिग आइडिया जिसको हम जनरली बोलते हैं बिग बैंग आइडिया टाइप ऑफ थिंग कि इस सेक्टर में अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें, ये इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ द सोसाइटी और इनोवेशन इन टर्म्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस, अगर ऐसा कुछ हम कर दें देन आई एम सीइंग दैट बहुत चेंजेस आ सकते हैं. सो द पर्पज इज ये आइडिया जो हम अगर यहाँ पे फ्लोट करते हैं 1-2 आइडिया इन ईच ऑफ द सेक्टर, प्रॉब्ली यंग जनरेशन जो यहाँ पे प्रेजेंट है और जो हमको लोगों को सुन रही है उनमें किसी को वो आइडिया को आगे ले जाने का मोटिवेशन मिलेगा. So starting with probably Professor Anil Gupta, I will request because he has done a lot of. Fawzia. I think we missed her listening in water sector. Yeah, Fawzia. Thank you so much, sir. Yes. You can answer one or two more. Inequity in the panel, huh? So probably. मुझे मेरे भी 1-2 छोटे सवाल हैं, जरा 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन उनका. एक ये कि जैसे अश्विनी जी ने बताया कि हम लोग थोड़ी दूर पे हमारा जिम है तो हम कार लेके वहां भीड़ कर देते हैं, लेकिन पैदल नहीं जा सकते. वहां पे जाके पसीना बहाएंगे 1.5 घंटे. रनिंग करने वाले लोग जाके सड़क पे कारें खड़ी कर देते हैं. आधा किलोमीटर जाना है घर से लेकिन कार लेके जाएंगे. व्हाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम होम इटसेल्फ? घर से क्यों नहीं करते हो भाई? आधा किलोमीटर क्यों कार चलाते हो? क्यों रोड के ऊपर प्रेशर डालते हो, कार्बन डालते हो? तो ये चीजें हम बेसिकली कर रहे हैं क्या? मैं तो पर्टिकुलरली करता हूँ. तो ये जो चीजें हैं ये भी एक हमें अपने साइकोलॉजी में डालना पड़ेगा कि इन चीजों में, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, आर वी रियली लिविंग डेंजरसली विद एज पर द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट इज कंसर्न? क्योंकि ये कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक तरीके से जो वावाजोड़ू बोलते हैं अपने जो आते हैं या भूस्खलन हो रहे हैं, ये सब भी इनका बड़ा खतरनाक डेंजरस लेवल है जो हमारी मानवता को बहुत खतरा पहुंचा सकते हैं. तो आप जरा इन सब चीजों को समेट के बताइए हमें. जी शुक्रिया. एक्चुअली हमारी मेजर प्रॉब्लम जो कि शुरू में आई थिंक प्रोफेसर गुप्ता ने भी ये पॉइंट आउट किया कि हम हर चीज का समाधान जो है वो टेक्नोलॉजी में ढूंढते हैं. हम ये सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी इज द आंसर टू एवरीथिंग, एंड हम अपने सिस्टम को एक सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम जो ऑस्ट्रोम ने जिस तरह डिस्क्राइब किया है, हम इसे उस तरह से नहीं, चूंकि हम उस लेंस से उसको व्यू नहीं करते हैं, तो हम इसलिए बिहेवियरल इश्यूज जो हैं खास तौर से, जो कि मोस्ट लाइकली जो अब आईपीसीसी की रिपोर्ट ने भी कहा है कि क्लाइमेट चेंज कैन बी एक्चुअली एट्रीब्यूटेड टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. सो और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या है? ये हमारा बिहेवियर है, ये जो दिनचर्या है, ये एक हैबिट सा बन गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड यू आर वेरी राइट इन सेइंग कि अगला कर रहा है तो हमारे करने में क्या गलती है. तो कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम्स में भी हमारे जो है ये इनग्रेन हो गया है. क्योंकि आई नो 70s में जब हम जी रहे थे तो मुझे अच्छे से मालूम है कि 70s में हम पैदल ही चलते थे, हार्डली किसी के घर में गाड़ियां होती थी. हमारे फादर के पास गाड़ी थी, लेकिन वो हमें कभी भी उन्होंने हमें उसका फायदा, मतलब एज इट इज ही नेवर अलाउड अस रियली. गाड़ी एज एन ऑफिशियल गाड़ी थी, एंड वी यूज्ड टू वॉक टू आवर स्कूल्स. हम कपड़े के थैलों के साथ जाते थे और शॉपिंग हम करते थे.
तो ये हमारे कल्चर का, हिंदुस्तानी कल्चर का, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज को सेक्रेट मानना हो, चाहे वो हमारी हमारे जो है लिविंग जो है वो सस्टेनेबल हो, ये तो एक हमारा हिस्सा था. इट्स जस्ट हमारे लिए तो इट इज जस्ट गोइंग बैक टू द रूट्स. बट ये वैल्यू सिस्टम कहाँ से शुरू होगा? ये वैल्यू सिस्टम हमारे घरों से शुरू होगा. ये हम बता रहे हैं, हमने अभी अपना मकान बदला, हमारी मदर ने जितने मेरे पुराने कपड़े थे उनको सबको मशीन से थैलों में कन्वर्ट और डस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया. My mother is 77 and I would have just maybe disposed them, and मैं environment पढ़ा रही हूँ. तो आप ये सोचिए कि उन्होंने लिटरली मेरे घर में इस वक्त जो कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर डिफरेंट एक्टिविटी, इट्स ऑल बीन एक्चुअली आप कहिए अपसाइक्लिंग हैज बीन डन. तो ये सब टर्म्स आजकल बड़े फैंसी हो गए, अपसाइक्लिंग, डाउन साइक्लिंग एंड ऑल दैट, लेकिन बड़े ही हैंडफुल ऑफ लोग इसको कर रहे हैं. इसको और शिद्दत से हमें आगे बढ़ाना है. खाली अपने घरों से बढ़ाना है, अपने इंस्टीट्यूशन से बढ़ाना है, अपने स्कूलों में सस्टेनेबिलिटी को वे ऑफ लाइफ करना है. ये नहीं कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एक सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं. एनवायरमेंटल साइंस जैसे हमारे यूजीसी ने कर दिया, एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, तो वो एक खाना पूर्ति हो गई कि भाई हम एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं. दैट इज नॉट व्हाट इज देयर. Sustainability has to become a way of life. And for the young kids, I will say, UNEP has come out with a very good book on Little Book of Green Nudges. Of course, at international level वो बहुत ज़्यादा applicable है, but Indian उसके लिए भी, जैसे आपने cycling कहा या food habits कहे, कैंटीन में किस तरह का फूड सर्व होना चाहिए, वेस्ट को किस तरह से. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक ऑफ लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस विद 45 नजेस, very small nudges. I think you can definitely take it forward to your schools. I'll just quickly touch upon Ashwini's question on the policy side of water also. कि and जो गुप्ता सर ने बताया कि कैच द रेन प्रोग्राम जो इंडिया का चल रहा है और जल शक्ति अभियान पिछले 3 साल से चल रहा है, एक मुहिम की तरह उसको चलाने की कोशिश जरूर करी जा रही है. बट whether it is getting implemented in letter and spirit is perhaps for us to see. मैं खुद नेशनल वाटर मिशन के साथ जुड़कर मैंने 650 नेहरू युवा केंद्र कोऑर्डिनेटर अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया मैंने उनकी ट्रेनिंग करी है. Totally मतलब gratis. I didn't, they said we have no money. I said I don't want money. I don't want money. You give them to me in small groups of 50 to 60 and I will train them. It took me about 12 days to really do that training. लेकिन हमने किया. तो each one of us have a responsibility कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम बना दी, how we can leverage on that scheme. I'm just talking about one scheme, National Water Mission as National Action Plan for Climate Change, जो 2008 में आया था, जिसमें बायोडाइवर्सिटी भी है, हैबिटेट भी है, एनर्जी भी है, 8 मिशंस हैं उसमें. उन मिशंस को हम 2008 से मतलब बातें तो बहुत कर रहे हैं, 20% वाटर यूज एफिशिएंसी, माइक्रो इरिगेशन, प्राइम मिनिस्टर कृषि सिंचाई योजना, वाटर यूजर एसोसिएशन, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, जल शक्ति अभियान है, जल जीवन मिशन है. अभी कल परसों न्यूज में था कि मध्य प्रदेश में, इवन महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले था कि औरतें कुएं से में नीचे उतर करके पानी ले रही हैं क्योंकि कुआं इतना सूख चुका है कि वो अपनी जानों को रिस्क करके पानी जाकर ले रही हैं. So are we really ensuring that we are implementing our policies in letter and spirit? And who can ensure that? It's we as citizens. We are failing in our duty when we are keeping quiet and not questioning people who are coming up with this scheme and at the same time not stepping up to contribute. हमें step up भी करना जरूरी है. Thank you. I'll stop. Yeah, thanks Fawzia ji. As I got a message, or you can say probably a concrete message, what you're trying to give is a small action in a daily life has a big impact on everyone's life. So if I take one action small, like you have said, upcycling of the waste or waste material in my own home, can have a big impact later on, that one, and leverage on the already existing schemes rather than every time thinking कि नई scheme होनी चाहिए. There are already things are going on in the water sector especially. Thanks. Maybe Professor Anil Gupta sir. Yes. नहीं, समय सीमित है. मैं दिनकर जी की एक लाइन बोलूँगा और उससे जो फौजिया ने कहा और जगदीश प्रसाद जी ने कहा और बच्चों ने कहा, हम सबका दायित्व बड़ा स्पष्ट हो जाएगा. पाप का भागी नहीं है केवल व्याग, पाप का भागी नहीं है केवल व्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध. ये जो बहस हो रही है ना अभी पर्यावरण के ऊपर, इसमें हम निरपेक्ष भाव से नहीं बात कर सकते. हमें तो साइड लेनी पड़ेगी, हमें तो किसी ना किसी की तरफ झुकना पड़ेगा.
और वो तय करना पड़ेगा बच्चों को कि भाई गोल गोल लाल टमाटर खाने हैं या अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग अलग रंगों के टमाटर खाने हैं। आपको सीधा लौकी के चाहिए या छोटी बड़ी लौकी को साथ में लेके सब्जी बनानी है। मतलब जैविक विविधता को अपने जीवन के अंदर लाएंगे, अपने माता पिता के ऊपर दबाव डालेंगे कि आप जो सब्जियां हैं, देसी सब्जियां ढूंढ के लाओ ना, कहाँ मिलती हैं भाई, हमें नहीं खाने है जो बहुत सारा एक जैसी शक्ल के जो सब्जियां हैं। एक 1989 में 89 में मैंने एक पेपर लिखा कि भाई वाई डू रीजन्स ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी हैव हाई पॉवर्टी। उसका कारण है कि जो कंज्यूमर डिमांड है इट इज फॉर यूनिफॉर्मिटी इन कलर, टेस्ट, शेप। अब हमको चाहिए डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी आर क्लोजली लिंक्ड। बच्चों ये ध्यान रखना, समाज में विचारों की विभिन्नता, और ये लिटरेरी फेस्टिवल के अंदर हम ये आयोजित कर रहे हैं चर्चा को, ये ध्यान रखना है लिटरेचर संपन्न कब होता है, जब अलग अलग विचार आते हैं। सब लोग एक भाषा बोलेंगे, एक ही बात करेंगे, एक ही मिथक की बात करेंगे, तो क्या संपन्न हो पाएगा साहित्य? नहीं हो पाएगा ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की जो कंटेक्स्ट है, वो कंटेक्स्ट बड़ा जरूरी है कि विभिन्नता विचारों की और विभिन्नता व्यवहारों की, जी सर, विभिन्नता आचार की और विभिन्नता व्यवहार की, हमारे आचरण में, हमारे काम में विभिन्नता लानी होगी। थोड़ा थोड़ा परिवर्तन लाएंगे, छोटे छोटे कदम उठाएंगे। अब आप सरकार की आपने बात की थी, कलवर्ट नहीं बनाते, सड़क तो बनाते हैं। पानी की आवाजाही की रास्ता नहीं देते, छोटा सा भी एक नॉर्म बनाए हुए हैं। अरे भाई उस नॉर्म को चेंज करो। अभी टोपोग्राफी चेंज हो गई है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। आपने देखा ग्रैंड ट्रंक रोड पर दोनों तरफ पेड़ लगे थे भाई, अब क्यों नहीं हाईवे में दोनों तरफ पेड़ लगते? सरकार ने एक नियम बनाया कि 10% आप प्लास्टिक यूज करेंगे रोड बनाने में। कौन सी रोड देखिए आपने आसपास अपने जहाँ पर प्लास्टिक यूज हो रहा है 10%, तो वेस्ट भी यूज हो जाता, सड़क भी अच्छी बन जाती, धूल भी कम उड़ती और टायर भी कम घिसता, यानी सब तरफ फायदा था उसका। लेकिन नहीं हुआ, नियम तो बना, पालन नहीं हो रहा है। तो बच्चों आपसे अपेक्षा है कि आप अपने माँ बाप पर भी, अपने स्कूल पर भी, अपने टीचर्स पर भी, अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं पर भी दबाव डालेंगे। यू हैव टू क्रिएट प्रेशर ऑन योर पेरेंट्स, योर टीचर्स एंड योर एल्डर्स that they should conform to the new ethics of conservation and reduce consumption. हमारे को अपना कंजम्पशन, अपना जो खपत है ना साधनों की, वो कम करेंगे। जितनी खपत कम करेंगे, कम खाओ, कम खाएंगे तो भाई अच्छा स्वस्थ रहेंगे, कम पैसा कम इस्तेमाल करेंगे तो वेस्ट कम होगा और सब पर्यावरण को अच्छा होगा। तो मैं अंत में अपनी तरफ से मैं सबका बच्चों का बहुत ध्यान से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने स्पीशीज के माइग्रेशन की बात, उन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की जो मेरी पकड़ में आई थोड़ी थोड़ी, और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि बच्चे इतनी कुछ सोच रहे हैं। लेकिन बच्चों आपको अपने इनिशिएटिव्स की बात भी करनी चाहिए कि मैंने अपने जीवन में यहाँ पर एक कसम खा लिया, एक परिवर्तन ले लिया है। फौजिया की जो बात थी ना, कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए, आप सब कसम खाओ कि अपने माँ बाप को प्लास्टिक के थैले में सामान नहीं लाने दोगे, बस सब परिवर्तन वहीं से आ हो जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, परिवर्तन हो करना। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्योंकि ये बच्चे इतना पेशेंटली सुने हैं हम लोगों को, हम ये चाहते हैं कि आर्या और आरजू एंड पार्थ, यू हैव बीन देयर टुगेदर, आप लोग कुछ सवाल अगर अपने एक्सपर्ट्स के लिए हैं या कुछ आप बताना चाहते हो 1 लाइन 2 लाइन में तो बता दीजिए। टाइम तो वैसे ही काफी हो गया, पर हम आपको जरूर वक्त देंगे क्योंकि आप लोगों ने बहुत पेशेंटली सुना है, बहुत धीरज से सुना जी। सही है। आरजू एंड आर्या, पार्थ अगर आप सुन रहे हो, आर्या आप बताइए, आप बहुत ही बढ़िया बात करती हो। यस, थैंक यू सर। मुझे बस एक क्वेश्चन था कि पूरी यंग जनरेशन में इस टॉपिक पर हम मोटिवेशन कैसे जागृत कर सकते हैं, क्योंकि सबको इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता, इसलिए सब में किस मेथड से मोटिवेशन हम जागृत कर सकते हैं? बेटे एक्शन लर्निंग करनी चाहिए, परिवर्तन करके सीखना है, ना केवल बात करके। कुछ भी शुरुआत करो, साथ में 10 फ्रेंड्स को, 5 फ्रेंड को, 4 फ्रेंड को बुला लो, और कभी कोई फ्रेंड नहीं आए ना तो अकेले करो, ठीक है ना। एक शब्द है अंग्रेजी में फोर्टिट्यूड इज द कैपेसिटी टू से नो व्हेन द वर्ड वांट्स टू हियर यस। तो कंफर्मिटी नहीं आना है, कौन अपने को ये नहीं देखना बाकी सब लोग ऐसे कर रहे हैं तो इसलिए मुझे भी ऐसा करना है। आपका दिल कहता है कि नहीं मुझे परिवर्तन लाना है, आप अपना रास्ता अलग, टैगोर ने कहा था ना, एकला चलो रे, अकेले चलो, और फिर उसके बाद में बाकी लोग जुड़ते जाएंगे, कारमा बनते जाएगा। वाह क्या बात। आरजू आपको भी कुछ पूछना है? सर मेरा कहना है Jagdish sir wants to say something. Yes sir. Yes. इंडिविजुअली
सर आपकी वॉइस थोड़ी लो है, राइट? होगा change myself. ये बात बिल्कुल सही है. Instead वो जो है वो वर्ड्स में कंफाइंड होता है, एक ही बात होती है. सर आवाज कट रही है आपकी, जगदीश सर आपकी आवाज आधी कट के आ रही है. आप वीडियो बंद कर दीजिए, अपना वीडियो बंद करेंगे तो शायद आवाज आएगी. जगदीश प्रसाद जी अपना वीडियो बंद कर दीजिए, शायद आवाज साफ हो जाएगी. आवाज कट के आ रही है तो पता नहीं चल पा रही. नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ा सा. वीडियो हाँ आप बताइए. पार्थ अगर आपको कुछ पूछना है सवाल तो पूछिए, एक सवाल का हम वक्त दे सकते हैं अभी. पार्थ आपने बहुत ही ध्यान से सुना है, आप क्या करने वाले हो आज के जो वार्तालाप से आप क्या लेके जाने वाले हो? मैं ये चाहता हूँ, अनिल सर ने बोला है कि हमें बच्चों को, हम सब लोगों को एक कसम खानी पड़ेगी कि नहीं मुझे तो करना है. चाहे जो आर्या ने बहुत बढ़िया सवाल उठाया इनफैक्ट कि बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, हमारे पास कितनी समस्याएं, ये उनको पता ही नहीं है, तो कैसे पता करें? आप क्या बताओगे अपने दोस्तों को आज के बाद कि हमें ये तो जरूर करना है अपनी दुनिया को बचाए रखने के लिए? बात बताइए. अनम्यूट करो. आप बोल सकते हो, अनम्यूट करिए. आई थिंक पार्थ को आवाज नहीं आ रही. आरजू को अगर आप कुछ, यस पार्थ बोलो बच्चे, बोलो. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are. Speak little louder, please. Yes. Can you repeat the question? Actually, the battery of the laptop was. What message you are carrying with the whole session today? कि जैसे अनिल सर ने बताया कि नहीं, हमें एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, प्लेस लेना पड़ेगा. We have to take a place that I'm not going to use the, as फौजिया मैम बोला कि कपड़े का सामान ले जाने वाले थैला यूज करेंगे, प्लास्टिक नहीं यूज करेंगे. ऐसे टाइप का साइकिल पे चले जाएंगे, जहां जरूरत नहीं कार, पापा को नहीं बोलेंगे कार लेके जाओ यार, अन्य से धुआं क्यों फैलाना वातावरण में. अरे आप कुछ मैसेज लेके जाएंगे, कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? आई थिंक वो बहुत सारे इनोवेटिव मेथड्स आज मतलब सुनने को मिले. लाइक वो जो 6 टाइप्स ऑफ डस्टबिन वाला जो था वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फिर बहुत बढ़िया. फिर वो ज़्यादा वो इंडोर प्लांट्स ऐसे घरों में लगा सकते हैं, अपनी बालकनीज में पेड़ लगा सकते हैं. बिल्कुल. और लोगों को बताएंगे कि ज्यादा वेस्ट. मुझे फोटो भेजना पार्थ, मुझे फोटो भेजना जब तुम लगाओगे तो भाई, है ना? यस. I just wanted to, बहुत छोटे स्टेप्स बेटे आप लोग ले सकते हैं, बहुत छोटे स्टेप्स अपनी सोसाइटी में और अपने स्कूलों में भी. मैं एक बताऊंगी, मैं एक बार लोरेटो स्कूल की ट्रेनिंग कर रही थी, तो वहां बच्चों ने खुद मुझे बताया कि हम जो है अपने स्कूल के गेट पर एक छोटा सा टैंक रख सकते हैं पानी का. तो जब हम स्कूल छोड़ के जा रहे होते हैं अपने बसों में, तो अब हमारे वाटर बॉटल्स में पानी बचा होता है, हम उस टैंक में उड़ेल के जा सकते हैं, जिसको कि हम गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ. बड़े नन्हे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स जिसको हम कहते हैं, जीरो वेस्ट कर सकते हैं. हम सब रोटियां एल्यूमिनियम फॉइल और वो सब में लपेट के ले जाते हैं, क्यों नहीं हम कपड़े के नैपकिन में उसको लपेट के, घर में तो हम कपड़े के में ही रोटी रखते हैं. तो बड़े नन्हे स्टेप हमें लेने होंगे, क्योंकि जब हम बहुत बड़ी बातें करते हैं तो फिर वो यही होता है कि वो अचीव करना डिफिकल्ट होने लगता है. लेकिन अगर हम इसको अपने एक जिंदगी का हिस्सा बना ले, जैसे वेस्ट अपनी सोसाइटी में जो आपके यंग बच्चे हैं सब इकट्ठे होकर के कहें कि नहीं भाई हम 2 ही डस्टबिन रखेंगे, हम प्लास्टिक एक में डालेंगे. और पहले वो बहुत सारी एजेंसीज हैं जो आजकल प्लास्टिक्स लेती हैं और रिसाइकिल करती हैं, जो अपसाइकिल रिसाइकिल करती हैं. एक से कनेक्ट हो गए, उनको हमने सप्लाई कर दिया, कुछ नहीं बस अलग किया, धोया, उसको सप्लाई कर दिया. तो बड़ी छोटी चीजें आप लोग अपने लेवल पर कर सकते हैं. आई थिंक ये डिस्कशन बहुत लंबा ऑलरेडी चल चुका है, तो मैं बस 2 सजेशन पर ही रुक रही हूँ. एक लाइन का मैसेज अश्विनी जी, सबसे एक लाइन का मैसेज दे दीजिए, सो दैट वी कैन एंड ऑन ए पॉजिटिव कंक्लूडिंग नोट. बाय टाइम आरजू एंड आर्या, अगर आप कुछ, आपको भी एक लाइन का बोलना है, सभी को बोलना है. पहले आई थिंक पहले बच्चों को बोल लेने देते हैं. ओके आर्या, आप बताइए, आपसे शुरू करना कि आप क्या मैसेज देना चाहोगी, क्या करना चाहोगी. यू कैन स्पीक इन इंग्लिश. Even I think it's true that we should take baby steps right now, because
in the end they are going to end up and make a huge impact. So if we do small things every day, then they can be useful in the future. Thank you. Thank you so much. Parth? Yes. So I do think that like small steps will eventually lead to greater like environmental stability for us in the future, and like we should all try to do whatever we can to increase, uh, make our environment better. That's wonderful. I think you're the future leaders of the environment. I mean, if you can, whatever the way you are saying, if you can just implement even 1% of it, then hopefully our environment will be safe. Yeah, Arshu, आपने बोला नहीं कुछ, आप बताइए. Yes sir, like we have one chapter on environment. हर साल एक chapter होता है environment पर I think now from now I will start implementing on that. Thank you so much. This session is going on a very positive note. Yes, starting with Ashwini sir. मेरे हिसाब से तो जो मैसेज फ्रॉम दिस ग्रुप एज वेल एज माय जनरल अंडरस्टैंडिंग इज दैट any environmental action, whether it is big, small, by anyone, is appreciable and noble activity of a person. That is what we have to take it. We have to appreciate then and there, and that is how we can bring the change. Not in ourselves, we can bring the change in others. Right, Jagdish That's sir. I think is a message that appreciate others for every good thing they do. Yes, For every good that thing they do. I think Thank that's them. a very nice one. We need to be appreciative. We need to show sense of gratitude. Yeah, Jagdish sir, your voice is not audible. Fawzia ma'am, by the time you can speak. I think my message would be that all of us, of course, have a role to play, but youth is our last flicker of hope, and we really, really appreciate what you are doing, and Yes. we really hope that you can actually inspire all of us to change our behaviors. Thank you. Yeah, thank you so much, Jagdish sir. Uh, I think he has हेड फोन network तो now. निकाल के बोलिए, Anil sir, we हेडफोन तो can निकाल finish. के We can बोलिए. finish. Yeah, we can finish हाँ. with your message, sir. Anil sir. हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे बाबा कहा करते थे, बच्चों को कभी सिखाना नहीं चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए, हमारा व्यवहार उनके लिए आचार बनना चाहिए. तो इसलिए हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि उनके सामने ऐसा व्यवहार करें कि उनको हमारे व्यवहार में कॉन्ट्रडिक्शंस, हिपोक्रेसी ज़्यादा नज़र नहीं आए और उनके लिए आसान हो जाए अच्छे निर्णयों पर कायम रहना. ये हमारी ज़िम्मेदारी है बच्चों के प्रति. क्या बहुत बढ़िया सर. Thank you so much. In fact, unfortunately, we are not able to connect with Jagdish Prasad sir. So thank you so much. It has been pleasure and learning experience for me. Particularly learned a lot. और बच्चों का तो मैं कितना धन्यवाद दूं वो बहुत ही कम है. इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. जितना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं कि हमारा देश का पर्यावरण और पूरे विश्व का पर्यावरण हम सेफ समझ सकते हैं. जगदीश सर, अगर आपको आवाज आ रही हो तो बात कर सकते हैं. अदरवाइज वी आर जस्ट गोइंग टू क्लोज द सेशन. फिर कभी बात करेंगे. जगदीश सर, थैंक यू सो मच एवरीवन वंस अगेन. सो वी आर ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ द टाइम. सो आप बोल सकते हैं कुछ अभी? ओके, नहीं बोल पाया, आवाज नहीं आ रही. थैंक यू सो मच. आई थिंक लास्ट में एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, नॉट ओनली टू जो यहाँ पे बच्चे हैं, मे बी जो कम्युनिटी और यू कैन से जो हम लोग को सुन रहे हैं विद द टेलीकास्ट, दैट अप्रोच एनीवन of us here and similar kind of thousands and millions of so-called people who are interested or they are slightly associated and concerned about the environment. If you have any problem, approach to them, and that is where you can link it. Arya, it's a good thing for you. Ashwani sir is a professor in CEPT University. Anil sir has been in IIM and he's running a lot of organization, Honeybee, then Srishti, Gyan, then NIF. You can always approach Anil sir. Hopefully, will help you out if you go with friends and your community of friends. Whatever questions, whatever suggestions you want, he will have everything. I think we could come to know. Like जैसे आर्या ने बोला अभी कि कैसे मोटिवेट करें, तो आपको कुछ आइडिया आ रहा है कि मेरे माइंड में ऐसा आइडिया है, आपके अपनी लोकेशन में आसपास कोई ना कोई पर्सन हो सकता है हम लोगों में से, या कोई भी है जो सिमिलर सिचुएशन में,
1 से 2 से 3 से आप बात करके देखिए, आपका आइडिया को कितना जो है सपोर्ट मिलता है, एंड दैट विल बी मोटिवेशन फॉर यू कि एवरीवन इज सपोर्टिंग इररिस्पेक्टिव, समवन हु इज नॉट सपोर्टिंग, देयर इज अ लार्जर ग्रुप हु इज सपोर्टिंग। और आपको आर्या समझना है कि ग्रेटा थनबर्ग वाज अ यंग गर्ल as of your maybe little older 1 or 2 years, and she has revolutionized the concept of climate change. At least people have started talking about it, and you people have to be that kind of person, that kind of, you need to imagine that way, that I am going to be that way. See, we don't compare with anybody, but हमें कुछ तो सोचना ही पड़ेगा कहीं जाने के लिए. You can always contact फौजिया मैम अगर इनको चाहिए वाटर से रिलेटेड कोई सोल्यूशन है तो वी हैव द नंबर्स, यू कैन ऑलवेज बी ऑफ ग्रेट हेल्प. थैंक यू सो मच वंस अगेन. वी हैव ऑलरेडी 35 मिनट सर, इतनी सारी बातें हुई, लगता है और भी बातें कर सकते हैं, लेकिन टाइम की. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you everyone. Thanks. Bye. Bye. Thank you, Fawzia.